Hey guys, welcome back to this channel. As you know that this is part 2 of our Q&A session video. So आज हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या आता है? ओके, व्हाट आर द फूड्स दैट डिक्रीजेस मिल्क सप्लाई? डिक्रीजेस मिल्क सप्लाई एज सच डिक्रीज करने के लिए देर इज नथिंग मच, बट या टू थिंग्स आई वुड लाइक टू एम्फोसाइज ओवर हियर इज आई हैव मुझे भी बहुत एक्सपीरियंसेस होता है जब मेरे कंसल्टेशंस चलते हैं. I have seen, I had one patient, sorry, I cannot call them patient. So मेरे पास एक मदर आई थी जिसको of course बहुत सारे issues थे of latching, positioning and all. And this is something which I heard from her is she was given coffee for 5-6 times in a day. बहुत ज़्यादा कॉफ़ी एंड देन शी वॉज स्ट्रगलिंग विद लो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई. The moment she stopped coffee to one or twice only, of course with other things, मतलब other things as in your positioning, latching and how breastfeeding works, वो सब कुछ समझने के बाद things went good for her and she was exclusively on breastfeeding then. So one is caffeine. Caffeine can be your tea and coffee. Tea and coffee 1 or 2 cup is recommended, that is fine. But बहुत ज़्यादा caffeine intake because of that नहीं होना चाहिए. So 1 or 2 is fine. 1 cup पीना है because you are having sleepless nights and all. So maybe you need that for a trigger or something like that. तो वो चलेगा. But not more than 2 cups maximum. Sometimes what happens is alcohol. Now alcohol consumption, too much of alcohol consumption can trigger, and if at all the alcohol consumption is there, so वहाँ पे आप 2 घंटे तक तो breast feed कर ही नहीं सकते हो. So any which ways you have to manage. If too much of alcohol consumption is there, it definitely goes to the breast milk and bloodstream से वो transfer हो जाता है and it goes to the baby also. But some researches have shown that if you consume a lot of alcohol, that it helps in lowering the breast milk supply. And yes, so these are the 2 things which has come to my mind right now. So that's it in this question. And moving on to the 4th question, do we need to take medicine like Lactcare, Shatavari apart from the normal food to keep the flow sufficient? Okay. Now Lactcare tablet. So firstly, I am not a doctor, so I cannot comment on Lactcare tablet. But generally what I have observed is बहुत सारे लोगों को Lactcare या tablets दिए जाते हैं. There are so many 2 to 3 tablets which are given. I will not say the name over here because it is not ethical to say name over here. So there are 2 to 3 tablets. I cannot prescribe any medicine because I don't have a doctor degree. I am a dietitian and a breastfeeding counselor, so it is not in my scope. But if the doctor has prescribed you, वो उसका टाइम होता है, एज इन किसी भी प्रिस्क्रिप्शन का डेज होता है, मतलब 10 दिन के लिए लेनी है, 4 दिन के लिए लेनी है, 5 दिन के लिए लेनी है. सो वहाँ पे इफ द डॉक्टर हैज सजेस्टेड यू कैन टेक दैट ऑफ कोर्स. Shatavari powder is something which helps in initial, so there are various types of powders also, so Shatavari, Gallicare, Lactcare and all. Okay, now these powders and all do help, of course do help, but I have got so many mothers जहाँ पे वो सब कुछ ले रहे हैं, normal foods, traditional foods, boosting foods, but then they are not doing breastfeeding correctly. मतलब करेक्ट पोजिशनिंग नहीं हो रहा है, लैचिंग नहीं हो रहा है. इन दैट केस व्हाट्स दे अज्यूम, जैसे स्टार्टिंग के कुछ दिन खत्म हो जाते हैं, नहीं दे डोंट ब्रेस्ट फीड and then they start taking all such things and the baby is not accepting breast. So what they feel is कि flow आएगा ना, तो if the flow will come then only the baby will come, because the flow is not there, the baby is not accepting. But here the problem is different. If if फ्लो आएगा तो बच्चा ब्रेस्ट फीड करेगा, फ्लो नहीं है तो ब्रेस्ट फीड. 10 आई एम ईटिंग, बट देन आई ऑल्सो फेस कि इतना सब कुछ करने के बाद टैबलेट्स ले लिया, शतावरी पाउडर ले लिया, गैलिक पाउडर ले लिया, उससे भी कुछ नहीं हो रहा है, आई एम नॉट गेटिंग दैट फ्लो. सो मदर हियर द कैच इज, इफ द बेबी इज नॉट गोइंग टू सक,
ओके वो कितना भी ले लो आपको वो फीलिंग ही नहीं आएगा कि बच्चा आपके पास सप्लाई है या तो फिर यू आर एबल टू ब्रेस्ट फीड. सो इन एनी ऑफ द केसेस बच्चे का सकिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. वो जब तक करेक्ट तरीके से नहीं होगा ना, बच्चे का सकिंग बच्चा कोई भी तरीके से आके सक करेगा ऐसा नहीं चलेगा. बेबी इज ऑल्सो ह्यूमन, इट इज अ जॉब. मतलब सकिंग इज अ काम, लाइक सकिंग इज एन एक्सरसाइज फॉर द बेबी. तो ऐसे ही रैंडम जगह पे सकिंग कराने के लिए नहीं लेके आना है. वी नीड टू पोजिशन द बेबी वेल. वो भले छोटू सा है, उसको इतना ज़्यादा दे आर मोर फ्लेक्सिबल, बट देन दैट डज नॉट मीन दैट दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. सो पोजिशनिंग ऑफ द बेबी मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. पोजिशनिंग के साथ लैचिंग चेंज हो जाता है. एंड दैट्स हाउ आई ऑलवेज whosoever messages me on my Instagram DMs, या तो यहाँ पे भी अगर कोई भी मैसेज करेगा, I would also always recommend, whenever messages come you cannot express everything in one message. Even if you try to, लेकिन कुछ ना कुछ छूट जाता है. because there are so many questions from my side. I need to understand what went through out your journey जब से बच्चा डिलीवर हो गया है, राइट. सो इन दैट केस कंसल्टेशन, 1-to-1 कंसल्टेशन ऑलवेज हेल्प. पता चलेगा कि क्या हो रहा था, क्या हो रहा है, क्या कैसे चल रहा है. नाउ मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज आई आस्क मदर्स इफ द बेबी इज रिजेक्टिंग, आई आस्क मदर्स टू कीप ट्राइंग. mothers after a few days they say I was trying but nothing is happening, but then I went go into details कि कितनी बार ट्राई कर रहे थे. so they always say that बच्चे को तो सिर्फ 2 to 3 times ट्राई किया. now in 24 hours if at all you are going to try just 2 to 3 times, he is not going to develop, he or she is not going to develop any habit with that, अगर 8 से 12 बार हम नहीं ट्राई करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है. so over here taking all such things do help of course with natural foods. To be honest, I have not taken any medication. I have not even taken Shatavari powder. I have not even purchased the Shatavari powder. I was only on cultural home-based food, and after around 7 or 10 days, some things were restricted with me also. But because I'm a dietitian myself, I just saw for first 7 days that it's the first 10 days that they are just giving me few things. And there I said that this is not going to work. I want everything which you are cooking for other family members. So from 11th day or 12th day I started eating everything, and no special food was made for me, and I was eating everything, just a few cultural foods, a few laddus, and I mean just water and all I was just focusing on. So that was the cultural thing which I was taking apart from my meals, but otherwise whatever other family members used to consume, same thing I was consuming.